Good morning, students. So let us start another chapter, chapter 12, that is sound. So let us read it. Anna, by reading itself, we shall come to know various characteristics of sound, various features of sound. So many things have been dealt with in this chapter. So let us read and explain one by one. We live in a world full of sound. Sound and music are a regular part of everyday sensory experience. हम सब बहुत कुछ सुनते हैं, तरह तरह का sound सुनते हैं. We hear sound from various sources: humans, birds, animals, vehicles, machines, television sets, music system, and so on. हर घर में तुम सब म्यूजिक सिस्टम रखे हो. We communicate with one another by speaking, hearing, and replying through speaking. And sound indeed plays a very important role in our life. So sound is also a means of communication. You make some sort of sound, you certainly get response from your friends or others. So, activity 1: get up early in the morning, make a list of sound you hear in your surroundings. Which of these you find pleasant? Are there some unpleasant sounds too? Certainly, there are many unpleasant sounds. Certainly, you will not like the sound of a frog. Certainly, you will not like the sound of a crow, etc. Science recognizes sound as an integral and essential part of nature. है ना, sound nature का ही एक हिस्सा है. It is a form of energy and it is there in nature. It is important therefore to try to understand its various features and properties. तो जैसे कि हम सब कोई भी physical properties का features या properties जानकारी लेते हैं, उसके बारे में जानकारी लेना हो तो क्या जानकारी लेंगे, क्या लेंगे, तो properties जानकारी लेते हैं. हाँ, लाइट का बहुत सारे properties, वैसे साउंड का भी बहुत सारे properties है. हाँ, so there are various features and properties of sound also. Would like to know all these things. The basic concepts concerning sound are, और साउंड के बारे में हम सबको जो जानकारी लेना चाहिए, जो हम सब नहीं जानते हैं, वो क्या क्या है. देखो, there are various questions to be answered. There are various questions, or there are various things which you do not know, the reason for which you should know. So what is first question is, what are the causes, what causes of generation of sound. हाँ, कारण क्या, साउंड प्रोडक्शन का कॉज क्या, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साउंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट रीजंस फॉर डिफरेंसेस इन साउंड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. अलग अलग सोर्सेस का साउंड अलग अलग होता है, व्हाट इज द रीजन. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. साउंड एक जगह से दूसरा कैसे जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग ऑफ साउंड बाय ह्यूमन ईयर्स. ह्यूमन ईयर्स को कैसे सुनाई देता है. वी हैव गॉट ईयर्स टू हियर, but how, what is the mechanism of hearing, how is the sound produced, how is it caught, and how it is taken to the brain. So there are various questions to be answered. Let us now try to get some understanding of this basic concept. चलो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें चाहिए उसको जानकारी लेने का प्रयास किया जाए. साउंड एंड वाइब्रेशन, देखो ये दोनों टर्म जो दिया है, साउंड एंड वाइब्रेशन, बिकॉज बोथ दिस टर्म्स आर इंटरलिंक. साउंड एंड वाइब्रेशन मीन्स व्हाट, जहाँ भी साउंड होगा, है ना, किसके चलते होगा ना, वाइब्रेशन के चलते. जहाँ भी साउंड हो रहा है, जहाँ से साउंड निकल रहा है, वहाँ कुछ वाइब्रेट कर रहा है, और जहाँ भी वाइब्रेशन होगा वहाँ साउंड बनेगा. ठीक है, wherever vibration taking place, sound will be produced from the vibration. So sound is the vibration is the cause of sound. Actually, vibrations are the cause of sound. जहाँ भी vibration होगा साउंड बनेगा, और जहाँ भी साउंड सुनाई दे रहा है, जहाँ सुनाई दे रहा है, निकल रहा है, इसका मतलब वाइब्रेशन वहाँ हो रहा है. So that is why sound and vibrations are interlinked. So let's come to sound. We usually think of sound, word sound, whenever we have a sense of hearing in our ears. We therefore usually say that sound is a form of energy which produces the sensation of hearing in our ears. What is sound? तो यहाँ देखो यही definition लिखोगे जरूरत पड़े तो. So what is sound? Sound is a form of energy which produces the sensation of hearing in our ears. We are familiar with different forms of energy like mechanical energy, heat energy, light energy, and so on. We also know that one form of energy can be converted into another. Yani there in the energy can be in the one form of energy can be changed into other. Energy can be interconverted. When we clap our hands, sound is produced. Let us pause and think as to which form of energy did we use to produce sound. तो अगर clapping करोगे तो what is the interconversion of is taking place. The clapping किया तो हमारा we clapped our hands. यानी we have used muscular energy of our body, and that muscular energy has changed into sound energy. Okay. We now know that we can produce sound by striking. Similarly, जैसे clapping, तो striking करो, shaking करो, है ना, हिलाओ, shaking, blowing, rubbing, and or plucking different objects, sound will be produced. A close look at all these situations so that in all these cases we actually set one or the another objects into vibration. हम सब ऐसे कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं. स्ट्राइक कर दे, हथौड़ा चला दिया तो वाइब्रेट होगा, हाँ, तो साउंड निकलता है. डेस्क में डस्टर को पिटाई कर दो, देखो कितना आवाज निकलता है. तो ड्राम को क्या
स्टिक एक तो डंडा डंडा मारो, हाँ, ट्राई टू स्ट्राइक द स्टिक ऑफ द ड्रम, लार्ज साउंड इज प्रोड्यूस्ड. So क्यों sound बनाना? Because the things vibrate. The things vibrate. All these things, wherever sound is being produced, certain the particles of the medium are vibrating. We actually set one or another into vibrations. It is these vibrations that produce sound. Whenever a sound, whenever a source produces a sound, there are always some vibrations linked with it. जहाँ से sound निकल के आ रहा है वहाँ कुछ vibration हो रहा है, मतलब वो particles of the medium vibrate. We can therefore think of vibrations as the basic cause of all sounds. Okay, so what is the cause of sound? The vibration of the particles of the medium is the basic cause of all sounds. Vibration of particles of the medium is the basic cause of all sound. Vibrate करता है. What is vibration? Repeated to and fro motion and of a particle by remaining at its own place. अपनी जगह पर रह के आगे पीछे ऊपर नीचे, है ना, movement को vibration कहते हैं. Let us verify this conclusion through some simple activities. So simple activities, ek tarah, just this person is playing ek tarah. Now the wire is seen to vibrate. At the same time, it produces musical sound. The skilled musicians use a bow to vibrate the string of the ek tarah. They use to produce lovely music and songs. Music and songs. So you also have in your home the various types of instruments like this, and they produce sound. They produce musical sound. So activity three, come to activity 3. Just there is a drum, duffly. So it is covered with a skin, leather, any type of covering is there, thin covering is there. So when you strike the surface of the drum with your hand or with a drumstick, then what will happen? This leather or this cover, this screen will vibrate, and as a result, if you keep something over this, they will also start dancing, yani they will go up and down. Suppose you keep very light papers, paper pieces or thermocol balls, or pith ball, they will move up and down. Because of what? Because of the vibration of this skin of the drum or the covering of the drum. Okay, so यही बोला है, you can feel the skin vibrating at its as it produces some sound भी निकलता है. तो साउंड जैसे कि वाइब्रेट हुआ तो साउंड बन गया. ठीक है, what happens? It is vibrating, and you'll feel that something kept also moving up and down, यानी the skin or the drum, the covering of the drum is moving up and down. That is called vibrating. So vibrating से चलते इसमें sound निकलता है. We can clearly see such vibrations in the case of a drum. Take a drum and strike it with a stick or with hand. The drum produces sound. Now put some colored, very thin, teeny paper balls on the drum membrane. The paper balls are seen to dance up and down the membrane when the drum is producing sound. तो sound जब बनता है यानी vibrate होता है. This drum covering of the drum vibrates, and result sound is produced. अब देखो और एक एक्टिविटी का है. Take a tin can like this, and one side, the bottom side is open, and the top one is also open, but you have covered with a balloon and a sheet of balloon, and you have put some grains, and put some grains like this, and try to produce sound from the bottom. What will you find? That the rice particles are dancing. The rice particles are dancing, and it is this you are producing sound. So sound is a form of energy, and which is able to move the rice particles. So it can do work. It is form of energy. Okay, and this particles vibrating because the covering of the balloon. Okay, the balloon sheet is also vibrating, and that is as a result the grains are also vibrating. Okay, so these simple activities help us to realize that basic cause of all sound is the vibration. Vibration जहाँ भी होगा वहाँ sound निकलेगा. Now let us come to vibrations. In the previous classes, we learned that vibration can be thought of as a to and fro. To and fro मतलब आगे पीछे और back and forth motion of a given object. आगे पीछे जाएगा तो क्या बोलेंगे इसको? Vibration. In some cases, the extent of vibrations of a source, देखो, in some cases the extent of vibrations of a source may be so very small that it may not be possible to detect them. लेकिन कभी कभी वाइब्रेशंस बहुत ही कम होता है, मतलब कमजोर होता है, तो उसका साउंड हमें सुनाई नहीं देता है. वाइब्रेशंस आर इजीली सीन टू बी प्रोड्यूस्ड बाय ड्रम्स, बेल्स, स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार एंड सो ऑन. हाँ, लेकिन बहुत सारे चीज का हमें वाइब्रेशंस जैसा ही होगा तो आवाज निकलता है. ठीक है ना.
So make a here is a list of some familiar musical instruments and try to identify their vibrating parts and which part vibrates. So flute, which part vibrate? Up in a flute, which part vibrate? Vibration is the air. Here the wire. Here the this covering the drum. Jaltarang. So water vibrates. Sitar, wire vibrates. Here these reeds, musical reeds vibrate. Santur. So these are all parts which are producing, which vibrate and produce sound, which vibrate and produce sound. Now sound produced by humans. Just साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस. देखो ये तो ह्यूमन बींग्स का देयर इज ए वॉइस बॉक्स कॉल्ड लैरिंग्स. ओके, सो लैरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स एंड प्रोड्यूस साउंड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हियर. जैसे कि लंग्स से हवा निकलेगा, है ना, एज यू ब्रीथ आउट, है ना, एयर कम्स आउट थ्रू दिस वॉइस बॉक्स, है ना, एंड दिस वॉइस बॉक्स हैज गॉट vocal cord. Vocal cords vibrate. Vocal cords, just like flute in Sehna, you will find the air is going out and these vocal cords vibrate and produce sound. Okay, so as human beings, as human beings, we all are fond of hearing the sound of our family members, friends, neighbors, and of course of great singers, both past and present. How do we human beings produce sound? What vibrates in our body system that help every one of us to produce our characteristic sound? तो ये जो साउंड हमारा हम सब निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं, इतना सब कुछ गाना बजा या गाना गा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, साउंड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. So what is the cause of producing sound in us? So देखो, it is the voice box called the larynx. So this is the voice box or larynx of the human body system that help us to produce sound. The voice box has two vocal cords. देखो, these are vocal cords. These are the vocal cords. So two vocal cords stretched across it. They are stretched across the voice box in such a way that there is a narrow gap. There is a narrow gap or slit between them, and air can pass. Air can pass through this slit. वो स्लिट के जरिए हवा निकलता है. ठीक है, और जैसे बांसी जैसे है ना, तुम्हारा जो बहुत सारे तुम सब मेले में खरीदते हो तो फ्लूट बजता है, उसी तरह से द लंग्स फोर्स एयर. देखो लंग्स से हवा निकलेगा, द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट. तो जैसे हवा निकलेगा तो ये जो बांसी जो है, जो वोकल कॉर्ड्स जो वाइब्रेट होगा, वोकल कॉर्ड्स स्लिट, the lungs force air through the slit between the vocal cords and this makes them vibrate and produce sound. So vocal cords will vibrate and produce sound. The human body has muscles attached to the vocal cords. अब vocal cord के साथ क्या muscles जुड़ा हुआ है? The human body has muscles attached to the vocal cords. These muscles can pull the attached ligaments and make the vocal cords. तो vocal cords को क्या conditioning कर सकता है, यानी उसको हम सब तरह तरह conditions change कर सकते हैं. The human body has muscles attached to the vocal cords. These muscles can pull the attached ligaments and make the vocal cords. तो vocal cords को characteristic बदल सकता है. कैसे कैसे? vocal cords can be made tighter or loosened up. हाँ, टाइट कर देगा नहीं तो लूजन होगा. जैसे कि हम सब कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्ट्रिंग को टाइट कर देते हैं, ढीला कर देते हैं. टाइट करने से अलग साउंड आएगा, ढीला होने से अलग साउंड आएगा. उस तरह से थिनर और थिकर, पतला भी कर सकते हैं वोकल कॉर्ड्स को, तो मोटा भी कर सकते हैं, थिनर और थिकर. These changes in the vocal cord help to change the pitch of the sound, यानी क्वालिटी ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड एंड मेक्स इट सिलर और फ्लैटर. सिलर मतलब काफी तीखा, काफी कान में हमें लगेगा. अब फ्लैट साउंड उतना, फ्लैट साउंड लाउड होगा लेकिन उतना कान में नहीं लगता जितना सिलर साउंड घुसता है. बच्चे का साउंड सिलर है और ओल्ड एज पीपल को फ्लैट साउंड है, तो वो ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं है. बट बच्चों का साउंड बहुत सिली साउंड है. दे विल अफेक्ट आवर ईयर्स. देन देयर आर डिफरेंसेस इन द साइज. और ये लिगामेंट्स का और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? दे मे बी टाइटेंड, दे मे बी लूजेंड, दे मे बी थिकर, मेड थिकर, दे मे बी थिनर. और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, and there are differences in the sizes, tautness, है ना, साइज अलग है, टाउटनेस अलग है, एंड थिकनेस ऑफ द vocal cords in men, women and children. तो men, women and children में ये vocal cords है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हो जाता है, in terms of size, in terms of tautness, in terms of thickness, है इस तरह से. These difference results in each group having a characteristic sound of its own. तो इसी के चलते अलग अलग बच्चों का एक साउंड है, यूथ का एक साउंड है, बुढ़ापा का एक साउंड है ना, गर्ल्स का अलग है, हाँ इस तरह से बॉयज का अलग है. So these are various factors. So it is the vocal cord or voice box that produces sound in human beings. Okay, and what are the those vocal cords? Voice box is the larynx.
वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड लैरिंग्स, लैरिंग्स है वोकल कॉर्ड्स, एंड वोकल कॉर्ड्स का कैरेक्टर्स चेंज हो सकता है, इसलिए साउंड अलग अलग होता है. सो दैट्स ऑल अबाउट.